Good morning, everyone. क्या कर रहे थे लास्ट हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फिनिश किया था हमने. यस. ठीक है. Let us start with today's lecture. कोई डाउट्स हैं क्या? एक सेकेंड. एमओटी असाइनमेंट में डाउट्स हैं क्या? एक सेकेंड. एमओटी के असाइनमेंट में डाउट है क्या? एक सेकंड रुकना. तुम लोग कुछ तो व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग ऑन व्हाट्सएप. तो जो भी डाउट्स है फटाफट खत्म कर लेते हैं ना. व्हाट्सएप पे डिस्कशन सारा क्लैरिटी नहीं हो पाता है. तो सारे डाउट्स हो गए फिर. ओनली 7.9 इज डाउट. 7.9 तो इजी है. According to molecular orbital theory, which of the following is correct? क्या डाउट है इसमें? वीरो, कैन यू रेज योर हैंड? बोल. सर मेरा आंसर इसमें लाइक जस्ट सी आ रहा था. नहीं, जस्ट बी आ रहा था. एंड एक सेकंड सर, आंसर चेक करने दो. इन्होंने डी दे रखा है बट जो मेरा नहीं आ रहा था, गलत आ रहा था. लूमो Just लेवल क्या check. होता है? C2 मॉलिक्यूल का लूमो लेवल क्या होता है? सर सिग्मा. एक सेकंड. हम्म.
जल्दी बताओ। हाँ सर, वो ऑर्डर याद नहीं रहता है, तो कभी कभी वो एक बार दिमाग में चलाना पड़ता है, उसके बाद आता है। सर सिग्मा टू पी जेड। सिग्मा टू पी होता है कि नहीं होता है? एक्स वाई जेड तो डिपेंड्स ऑन आवर कन्वेंशंस। सर एक्स वाई जेड को। जेड में चेंज। तो सिग्मा टू पी एक्स भी हो सकता है, सिग्मा टू पी वाई भी हो सकता है, सिग्मा टू पी जेड भी हो सकता है। अच्छा, या सिग्मा टू पी एक्स, ये करेक्ट है ये। तो यहाँ इन्होंने एक्स को एक्सेस इंटरन्यूक्लियर ले एक्सेस रखा लिया है। है, हाँ। ओके सर। और सी ऑप्शन, C2 2 - सर वन सिग्मा एंड टू पाई। वही तो दिया है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। करेक्ट तो यस है। सर। तो ABC आर ऑल करेक्ट। यस सर, सो ऑप्शन डी। ठीक है। डन सर। एनी अदर डाउट किसी को? बुकलेट, असाइनमेंट, एमओटी से रिलेटेड? ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू। हमने एमओटी कंप्लीट किया था। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। अच्छा, फ्राइडे के TWT में विल आस्क क्वेश्चंस टिल एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक। या आज डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा, डाइपोल मोमेंट तक कर लेते हैं, ठीक है। So let us start with today's lecture, chemical bonding lecture 40. We'll study about dipole moment. It is a property associated with polar covalent bonds. Whenever you have two atoms bonded by a covalent bond having different electronegativities, suppose the electronegativity of atom B is greater than electronegativity of atom A, then the bond acquires partial charges. This bond becomes a polar covalent bond. Polar means having two opposite charges on two adjacent atoms or two ends. The bond becomes polar covalent bond. ठीक है। The extent of polarity is measured by a quantity known as dipole moment. कौन सा कंपाउंड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन सा बॉन्ड कम पोलर है, ठीक है। दैट इज मेजर्ड बाय a quantity called as dipole moment, ठीक है। Dipole moment mu is mathematically calculated as Q into D. Q is the magnitude of charges. We have equal and opposite charges. ऐसे सोच लो, दो चार्जेस हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. Electric dipole, we have two equal and opposite charges, plus Q and minus Q, separated by a distance D. The dipole moment is calculated as Q into D. Q is the magnitude of charge and D is the separation between the opposite charges. Okay. More is the magnitude of charge and more is the separation between the charges, more is the dipole moment. It is a measure of the magnitude of polarity of a polar covalent bond. Okay. We call dipole moment is a vector quantity and we consider its direction towards the more electronegative atom. Dipole moment is a vector quantity
its direction is towards the more electronegative atom. जैसे A और B में for the bond between A and B, B was more electronegative, the dipole moment will be directed towards the more electronegative atom. तो dipole moment को direct ऐसे represent कर सकते हैं, arrows से ऐसे represent कर सकते हैं. Okay? The dipole moment is towards the atom B. ठीक है, it's a vector quantity. For example, within a molecule, we can have multiple atoms bonded in a molecule. Suppose we have carbon bonded to hydrogen and chlorine. On the carbon chlorine bond, chlorine is more electronegative, so dipole moment is towards the chlorine atom. On the carbon hydrogen bond, carbon is more electronegative, so dipole moment will be towards the carbon atom. On every bond, we can assign a direction of dipole moment. Sometimes the dipole moments associated with the bond are also called as bond moments. Is the dipole moment associated with the bond? The net dipole moment in a molecule will be calculated by the vector sum of all the different resulting bond moments in the entire molecule. So as it is a vector quantity, the net dipole moment will be a vector sum of all the different dipole moments present in the molecule. ठीक है? क्लियर है ये? आ रहा समझ में? पेज टर्न करूं? Sometimes molecules have lone pairs, and there can be dipole moments associated with the lone pairs also. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस and electrons away from the nucleus. Even lone pairs results in some dipole moment. There is some charge separation. So there is some lone pair moment. On the hydrogen-nitrogen bond, the dipole moment is directed towards the nitrogen atom. Okay? On the hydrogen-nitrogen bond, dipole moment is directed towards the hydrogen atom. There is some lone pair moment also. ठीक है, यहाँ पे lone pair moment को मैं एक different color से represent कर लेता हूँ. Lone pair moment is the dipole moment associated with the lone pair. It is always towards the lone pair. It is directed towards the lone pair. One second. The net dipole moment of a molecule is calculated as the vector sum of all the different dipole moments present. Is calculated as the vector sum of
all the different dipole moments present. Vector addition physics में किया होगा. Suppose we have two dipole moments mu1 and then mu2. Angle between them is theta. ठीक है. तो mu resultant can be calculated as root under mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. किया है ना ये वेक्टर सम निकालने का फॉर्मूला. mu r represents the resulting dipole moment. ठीक है. It will be root under mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. क्लियर है ये. Unit of dipole moment. SI unit is coulomb meter. Abbreviated as C small m. It's not centimeter. ध्यान से रखना. It is capital C and small m coulomb meter. Commonly used unit in chemistry is dBi, capital D. 1 dBi is 10 raised to minus 18 ESU centimeter. Now let us convert this into SI units. याद करो ESU मैंने electrostatic unit is a unit of charge. Charge on one electron, the magnitude of charge on one electron in SI units is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is equal to 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU. So we can relate ESU and coulombs by this expression. ये नोट कर लो. नेक्स्ट पेज में मैं dBi और कूलम मीटर का रिलेशन लिखाता हूँ. केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट नॉर्मली हम डिबाइज में मेजर करते हैं. where 1 dBi is 10 to the power minus 18 ESU centimeter. पेज 10 करूं. एक मिनट रुकना.
रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम मीटर्स नेक्स्ट पेज में करते हैं. We can write 1 ESU is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs by 4.8 into 10 to the power minus 10. This comes out to be 10 to the power minus 3 by 10 to the power minus 9 by 3 coulombs. And 1 centimeter is 10 to the power minus 2 meters. यहाँ से आ जाएगा 1 ESU centimeter is equal to 10 to the power minus 11 by 3 coulomb meters. Now from here we'll get 1 dBi is equal to 10 to the power minus 18 ESU centimeter is equal to 10 to the power minus 18 into 10 to the power minus 11 by 3 coulomb meters. Or 1 dBi is 10 to the power minus 29 by 3 coulomb meters. Relation between dBi and the SI unit of dipole moment. ठीक है, क्लियर है ये? Normally, for any covalent bond, for any polar covalent bond, the value of Q is a fraction of electronic charge. Fractional electronic charge. Because polar covalent bond में fractional charges होते हैं of an electron. So the value will be somewhat, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था 4.8 into 10 to the power minus 10 upon n, where n is the factor by which the charge is divided, the fractional charge. Or we can write 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU into F, where F is the fraction, maybe 20%, 10%, etc. The fraction of electronic charge that is present on an electron. Value of distance will be equal to bond length, distance between the atoms. कोई भी polar covalent bond लेंगे A and B, A has delta plus, B has delta minus. The distance between the atoms will be the distance between the charges. The distance is equal to bond length, which is often is in the order of angstrom. Is in the order of angstrom. Okay, 1 angstrom is 10 to the power minus 8 centimeters. Therefore, dipole moment, which is equal to Q into D, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे is of the order of 10 to the power minus 10 ESU. So the value of charge is of the order of 10 to the power minus 10 ESU. The value of bond length is of the order of 10 to the power minus 8 centimeter. So 10 to the power minus 10 ESU into 10 to the power minus 8 centimeters. We will say that this comes out to be 10 to the power minus 18 ESU centimeter is equal to 1 dBi. Therefore, we can say that dipole moment is of the order of dBis. In for different bonds, the dipole moment associated with a polar covalent bond, it will be of the order of dBi. We can write for bonds, the dipole moment is of the order of dBi. Write this point. Mu is generally in the order of dBi. Some dBi values आएगा 1 dBi, 2 dBi, 1.5 dBi. Clear है ये point?
So why do we measure dipole moment in ESU centimeter? Because the charges will be in the order of ESU. The bond length will be in the order of 10 to the power minus 8 centimeter. When you multiply that, the value of the magnitude of dipole moment will be in the order of 10 to the power minus 8 in ESU centimeter. ठीक है? क्लियर है ये? टर्न करूं पेज? We can write normally for any polar covalent bond, the dipole moment is in the order of dBs. Can use the dipole moment data to calculate the percentage ionic character of a covalent bond. Calculation of percentage ionic character from the dipole moment. So how the percentage ionic character is related to dipole moment? Suppose करो ये जो bond है इधर ही explain करता हूँ. अगर atoms पे partial charges हैं, we'll say that bond is partially ionic. Bond is a covalent bond with some ionic nature because charges are partial positive and partial negative charges. Full positive, full negative charges नहीं है. The value of Q is fractional electronic charge. Fraction of electronic charge. If the bond was 100% ionic, अगर bond 100% ionic होता, तो atoms पे full positive, full negative charge होता +1 and -1. If 100% ionic. If the bond is 100% ionic, then we'll say that the atoms will have full positive and full negative charge because ionic bond is formed by transfer of electrons. तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे Q का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अकॉर्डिंगली पार्शियली आयोनिक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कम आएगा. 100% आयोनिक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा. जहां पे Q का वैल्यू ज्यादा वहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा. वी से दैट mu actual is equal to Q into D, where Q is the actual charge present on atoms. We can write mu 100% ionic is equal to E into D, where E is the electronic charge. Suppose now we write percentage ionic character as equal to the
actual dipole moment upon the dipole moment if the compound was 100% ionic into 100. This is sometimes also written as mu actual upon mu calculated into 100, where mu calculated is nothing but same as the mu 100% ionic. If bond length D is equal to L angstrom, इसकी वैल्यू आ जाएगी L into 10 to the power minus 10 meters और L into 10 to the power minus 8 centimeters. We'll get mu 100% ionic, which is nothing but mu calculated is equal to 1 E का वैल्यू आ जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs into L into 10 to the power minus 10 meters. This comes out to be equal to 1.6 into 10 to the power minus 29 L coulomb meters. आ रहा है समझ में? Non-polar covalent bond has dipole moment 0, definitely. कैसे लिखेंगे? रुको, let us write this as 1.6 L into 10 to the power minus 29 coulomb meter. डिवाइस में कैलकुलेट करेंगे, this will become 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU into L into 10 to the power minus 8 centimeters. This becomes equal to 4.8 into 10 to the power 4.8 L into 10 to the power minus 18 ESU centimeter or 4.8 L d by. So we can write, we can summarize our results. Mu calculated is 4.8 L d by, which is equal to 1.6 L into 10 to the power minus 29 coulomb meters, where L is the bond length in angstrom. ये क्लियर है? ये एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड. The dipole moment of HCl was found to be 1.2 dBi. If the HCl bond length is 1.5 angstrom, find the percentage ionic character of HCl bond. Find the percentage ionic character of HCl bond. करो, ये प्रीवियस पेज जल्दी से नोट कर लो.
16.66% is correct. देखो solution देखो. We'll first calculate mu calculated. Mu actual is given. It is equal to 1.2 d by. Mu calculated will be 4.8 L d by. What is the value of L here? Value of L here is 1.5. The bond length is 1.5 angstrom. So 4.8 into 1.5 d by. Now we'll get percentage ionic character as equal to mu actual upon mu calculated into 100. So mu actual 1.2 d by, mu calculated 4.8 into 1.5 d by into 100. सॉल्व करेंगे, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 100/6 इज इक्वल टू 16.67%. क्लियर है ये? आ रहा है समझ में? पेज टर्न करूं? Molecules for which net dipole moment is equal to 0 are said to be non-polar. And those for which there is some net dipole moment. एक सेकंड रुकना आदित्य. Those for which there is some non-zero dipole moment are said to be polar. तो polar molecules का मतलब dipole moment is not equal to 0. Non-polar molecule का मतलब dipole moment is 0. ठीक है? ये प्रीवियस पेज देख लो जल्दी से. Molecules for which net dipole moment is 0 are said to be non-polar, and the molecules for which net dipole moment is non-zero are said to be polar. Examples of non-polar molecules. So we can say that non-polar molecules के examples में देखो, we can have molecules containing non-polar bonds, bonds between two same atoms, H2, Cl2, Br2, I2, P4, S8. Okay? These are all examples of non-polar molecules. Where atoms bonded are same, the bonds are not covalent bond, the bonds are not polar bonds. Bonds are covalent, but they are not polar covalent bonds. So for all of these molecules, the net dipole moment is 0. Then we can have some symmetrical molecules. जिसमें dipole moments cancel out. Although bonds are polar, symmetrical molecules containing polar bonds. Bonds are polar, but the dipole moments cancel out. Example can be CO2. CO2 का structure देखेंगे तो carbon double bond हो, carbon double bond हो. The two dipole moments are in opposite directions. They will cancel each other. The net dipole moment will be 0.
क्या बोल रहा है विरोक? नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है. The molecules which have dipole moment 0 are non-polar, simply. तो CO2 में दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शंस में will cancel each other's dipole moment will be 0. Then we have, एक second, many more symmetrical molecules can be there. SO3 में will have three vectors at 120 degrees. ठीक है, they will cancel each other's dipole moment. ठीक है, we can have CH4, CCl4 etc. Similar structure आएगा दोनों का. Carbon tetrachloride. All the 4 chlorine atoms will cancel each other's dipole moment. Symmetrical structures result in 0 dipole moment. आ रहा समझ में? एक मिनट रुकना. कुछ और एग्जांपल देखो. फिर we can think of PCl5. PCl5, we have 3 chlorine atoms at equatorial positions. They will cancel each other's dipole moment. Then 2 chlorine atoms, one above it and below it, they will cancel each other's dipole moment. So we can say that the 3 equatorial chlorine atoms cancel each other's dipole moment, and the 2 axial chlorine also cancel each other's dipole moment. The net dipole moment comes out to be 0. Net dipole moment is 0. So symmetrical molecules, net dipole moment is 0. Another important example here is PCl3F2. Fluorine, the more electronegative atom, occupies the axial position. The 2 fluorine atoms will cancel each other's dipole moment. The 3 chlorine atoms will cancel each other's dipole moment. The net dipole moment will be 0. आ रहा है समझ में? SF6 octahedral structure, symmetrical structure. All the 4 fluorine atoms will cancel each other's dipole moment. All the 6 fluorine atoms will cancel each other's dipole moment. Net dipole moment will be 0.
HCF4, xenon bonded to 4-fluorine. For symmetrical molecules, dipole moment is 0. They are all non-polar, despite having polar bonds. ठीक है, क्लियर है ये? Normally we ignore dipole moments due to lone pair, but consider करोगे तो भी तो cancel out हो जाएगा. Even if you consider the dipole moments due to the lone pairs, they will cancel each other. Normally we don't consider them, but still यहाँ पे देखेंगे दोनों lone pairs symmetrically present है. The two lone pairs will cancel each other's dipole moment. ठीक है, क्लियर है ये? Now we'll do examples of some polar molecules. Examples of some polar molecules. CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, SO2. SO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं, बीच बीच में मैं कुछ स्ट्रक्चर्स भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. PCl2F3, SF4, BRF5, etc. are examples of some polar molecules where dipole moments will not cancel out. जैसे SO2 में देखो, there are two double bond O and one lone pair. The dipole moments will not cancel out. So normally we don't consider the lone pair. Lone pair moment बहुत ज़्यादा नहीं होता है, but the two oxygen atoms, okay, the dipole moments will not cancel out. Mu not equal to 0. Talking about PCl2F3, it's an important molecule. PCl2F3 has trigonal bipyramidal geometry. More electronegative atom tends to occupy the axial position. तो fluorine, 3 fluorine है, उसमें से 2 axial पे जाएगा. Although the axial fluorine atoms cancel each other's dipole moment, the equatorial, all the 3 equatorial atoms are not identical. They will not cancel each other's dipole moment. ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो 3 बॉन्ड्स उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा. म्यू नॉट इक्वल टू 0. इट्स नॉट अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर है ये? SF4 देखेंगे. SF4 में इट्स अ सीसॉ शेप्ड स्ट्रक्चर. डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0. डाइपोल मोमेंट्स आर नॉट कैंसिल्ड आउट. अगर एक्सियल का कैंसिल आउट होगा तो इक्वेटोरियल का कैंसिल आउट नहीं होगा SF4 में.
ठीक है। BRF5 देखेंगे, इट हैज अ स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। This also will have non-zero dipole moment. आ रहा है समझ में? कुछ क्वेश्चन देखो। It is given that mu of chlorobenzene is 1.5 dBi. Find mu of following. ट्राई करो। Concept is vector addition. केवल वेक्टर एडिशन यूज करके हमें ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। अरे वेक्टर एडिशन है, डायरेक्ट ऐड थोड़ी करते। 1 और 2 का सेम थोड़ी आएगा। अंश 1 और 2 में से कोई एक का 3 आएगा, दोनों का 3 नहीं आएगा। आई थिंक दोनों में से किसी एक का भी 3 नहीं आएगा। 1 और 2 दोनों रॉन्ग है तुम्हारा। 4 का आंसर भी रॉन्ग है। 5 का आंसर करेक्ट है।
356 is correct. थ्री में देखो डाइपोल मोमेंट्स आर ऑपोजिट साइड्स, डाइपोल मोमेंट विल बी 0. 6 में भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 3 डाइपोल मोमेंट्स एट 120 डिग्री एंगल्स टू ईच अदर, डाइपोल मोमेंट विल बी 0. तो 3 and 6 will have 0 डाइपोल मोमेंट्स. आ रहा समझ में 3 और 6? फर्स्ट वाला देखो मैं सॉल्व करता हूं. Effectively, we have two vectors at angles of 60 degree. इसको कैसे लिखेंगे? एक वेक्टर 1.5, एक और वेक्टर 1.5, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60. तो म्यू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? इसको मैं म्यू के टर्म्स में लिखता हूँ, बाद में वैल्यू पुट करूंगा. म्यू एंड म्यू, दिस विल बी म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 cos 60, 2 म्यू स्क्वायर cos 60. cos 60 का वैल्यू होता है हाफ. दिस इज 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इंटू हाफ. ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा √3 म्यू. तो √3 इंटू 1.5. आ रहा है समझ में? तो फॉर द फर्स्ट वन आंसर इज 1.5 √3. For the second one, the angle between the two vectors will be 120. √6 is also not correct, Arav. Answer is 1.5 √3. √6 is not correct. The resulting of these two vectors will be along this direction. And mu r will be equal to exactly between these two. So mu r will be equal to mu square plus mu square plus 2 mu square cos 120. Angle is 120 degree. 120 degree cos 120 is minus half. Root under 2 mu square minus mu square is equal to root under mu square is equal to mu is equal to 1.5 divided. एक important point है कि यहाँ पे जो final dipole moment है, the net dipole moment is directed along this direction and it is equal to 1.5 divided. ठीक है? We'll use this in solving the question number 4. We'll use this result in solving the question number 4. Clear है ये question number 2? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3 आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3 आएगा. देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ.
We'll use the result which we solved in question number 2 to solve the question number 4. ठीक है, ध्यान से देखना. For these two chlorine, there will be a dipole moment of 1.5 dBi in this direction. और इस क्लोरीन की वजह से ऑलरेडी 1.5 dBi है ड्यू टू दिस क्लोरीन. तो टोटल तीनों क्लोरीन की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5 plus 1.5 because they both are in the same direction. आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 समझा? तो ये दोनों पिंक से जो मैंने मार्क किया है दोनों क्लोरीन का, उसका डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थर्ड क्लोरीन मार्क्ड एज येलो, दैट इज इक्वल टू 1.5 dBi. और उस थर्ड क्लोरीन का भी 1.5 dBi, दोनों ऐड करके नेट कर देंगे 3 dBi आ जाएगा. थर्ड का 0 होगा, थर्ड में तो कोई डाउट नहीं है ना. थर्ड विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट. और सिक्स्थ में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए. थर्ड एंड सिक्स्थ आर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट. ठीक है, क्लियर है थर्ड एंड सिक्स्थ? Now let me explain the fifth one. Now let me explain the fifth one. फिफ्थ में भी हम थर्ड का रिजल्ट यूज करेंगे. For the two pink marked chlorine atoms, mu is equal to 0. For this chlorine, mu is equal to 1.5 dBi. और बाकी दोनों जो पिंक में मैंने मार्क किया उनके डाइपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट इज ओनली ड्यू टू दिस क्लोरीन, which is equal to 1.5 dBi because the remaining two chlorine atom dipole moment is cancelled out. तो 5 का आंसर आ जाएगा 1.5. क्लियर है ये? Now we'll discuss comparison of dipole moment in different molecules. The first point है dipole moment increases with increase in electronegativity difference of the bonded atoms. More is the electronegativity difference between the bonded atoms, more will be the dipole moment. इसके examples लिख सकते हैं. Dipole moment of HF is more than that of HCl, is more than that of HBr, is more than that of HI. Similarly, dipole moment of HF is more than that of H2O, is more than that of NH3, is more than that of CH4.
more is the electronegativity difference between the bonded atoms, more is the dipole moment. यहाँ पे एक important exception देखो, याद रखना है. If we compare the dipole moments of CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I, expected order is C carbon fluorine bond will have greater electronegativity difference than carbon chlorine bond, than carbon bromine bond, than carbon iodine bond. So CH3F should have a higher dipole moment than CH3Cl, than CH3Br, than CH3I. But contrary to this, exception is found that CH3F is found to have a lower dipole moment than CH3Cl. It has a lower dipole moment due to small size of fluorine atoms, which results in resulting in a short bond, shorter carbon fluorine bond, which decreases the dipole moment. Because dipole moment also depends on bond length. Dipole moment is Q into D. It depends on electronegativity difference. It also depends on the bond length. Dipole moment is Q into D. Although electronegativity difference is high in CH3F, but because of the small size of fluorine, the bond length is found to be shorter, due to which bond length decreases, due to which dipole moment decreases. Overall order is, इसका overall order है CH3F is only lower than CH3Cl. तो highest आता है CH3Cl का, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I. ठीक है, क्लियर है ये? डन करूं? एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देखो, NH3 एंड NF3. ठीक है, NH3 में अगर डेल्टा EN देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन का 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0.9. NF3 में अगर डेल्टा EN देखेंगे,
It is 1. तो more electronegativity difference should result in higher dipole moment, but it's NH3 which has a higher dipole moment. ठीक है. The value of dipole moment for NF3 is very, very low. Dipole moment is around, NF3 का dipole moment काफी कम होता है. It's around 0.2 dBi. That of NH3 is around 1. एक सेकंड, dipole moment 1 dBi शायद NH3 का. वन 1.4 dBi. So despite having greater electronegativity difference, NF3 has a lower dipole moment. An explanation is based on their structures. We explain this based on their structures, based on the resultant of the lone pair moment and the bond moments. Nitrogen-hydrogen bond dipole moment is directed towards nitrogen. Nitrogen-fluorine bond dipole moment is directed towards fluorine. So in NH3, we say that the bond moments are in the same direction as in the lone pair moment. The bond moments are in the same direction as the lone pair moment. Whereas in NF3, we'll say that bond moments directed downwards. Cancel the lone pair moment as they are in opposite directions. ठीक है, क्लियर है ये? NF3 results in very low dipole moment. एक सेकंड रुकना. ठीक है, क्लियर है ये?
सेकेंड फैक्टर लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप. ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया हमने. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा. एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं. SO2 greater than CO2. SO2 is not a symmetrical molecule, CO2 is a symmetrical molecule, तो CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है. ठीक है. We can say that SF4 greater than CF4. CF4 सिमेट्रिकल है, डाइपोल मोमेंट 0 आएगा. ठीक है. SF4 seesaw shape, unsymmetrical, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो. तो डाइपोल मोमेंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन शेप. याद करो हमने PCl2F3 और PCl3F2 किया था. PCl3F2 सिमेट्रिकल आएगा, डाइपोल मोमेंट 0. PCl2F3 नॉन जीरो. SO2 mu not equal to 0, SF4 mu not equal to 0, PCl2F3 mu not equal to 0. ठीक है, क्लियर है ये? पेज टर्न करूं? Some more examples. Comparing dipole moment between CH3X, CH2X2 and CHX3. It is found that CH3X has a dipole moment and CH2X2 has a higher dipole moment than CHX3. And this is true for X is equal to chlorine, bromine and iodine. For X is equal to fluorine, the dipole moment slightly changes. CH2F2 has a higher dipole moment than CH3F.
Normally for the larger halogen, more is the number of halogen atoms. There is some cancellation of dipole moment, which results in decrease in dipole moment. So therefore, CH3Cl more than CH2Cl2 more than CHCl3. Same order is true for bromine and iodine, but for fluorine, CH3F has a very low dipole moment. Clear है ये? ये dipole moment का section हो गया. Now we'll do intermolecular forces. We talk about these are attraction forces between two molecules. Two different molecules. We say that attraction forces within a molecule is a bond between different atoms, covalent bond. But between two different molecules, attraction forces are called as intermolecular forces. Okay? This can be mainly of 5 types. Depending on which type of molecules are being attracted, the attraction force between the molecules can be of 5 types. इसमें सबसे पहले लिखो ion dipole attraction. This type of forces exist between ions and polar molecules. For example, the attraction force between Na plus ions and water molecule. Water is a polar molecule. Okay, Na plus is a positive ion. Okay, Na plus will attract the negative end of water molecule towards itself. Water molecule में oxygen पे delta minus है, hydrogen पे delta plus है. The negative end of water is attracted towards the sodium ion. ठीक है? आ रहा समझ में? The attraction forces between ions, either cation or anion, and polar molecules such as water is called ion dipole attraction. Hydration of ions occurs because of ion dipole attraction. We can say that hydration of ions occurred because of ion dipole attraction. You can write this point here also. Hydration of ions is due to ion dipole attractions. पेज टर्न करूं?
Then we have dipole-dipole attraction. It exists between two polar molecules. Suppose we are talking about attraction force between one HCl and another HCl molecule. HCl is a polar molecule. Two HCl molecules will attract each other by dipole-dipole attraction. The negative end of chlorine will attract the positive end of HCl. The negative end of HCl will attract the positive end of HCl. The Cl minus will attract the H delta plus. Clear है ये? So this is dipole-dipole attraction. इसमें एक important point है, the interaction energy for dipole-dipole attraction is proportional to 1 by r cube for stationary dipoles. For stationary polar molecules, for stationary dipoles, the interaction energy is proportional to 1 by r cube, where r is the distance between the molecules. Okay. For rotating dipoles, the interaction energy is proportional to 1 by r to the power 6. Okay. This we have to do in electrostatics in physics. This derivation will be done in electrostatics in physics. बस अभी के information के लिए लिख लो. The interaction energy is proportional to 1 by r cube for stationary dipoles. The interaction energy is proportional to 1 by r to the power 6 for rotating dipoles. For stationary polar molecules, interaction energy is proportional to 1 by r cube. For rotating polar molecules, interaction energy for dipole-dipole attraction is proportional to 1 by r to the power 6. ठीक है? Next is ion-induced dipole attraction. It exists between ions and non-polar molecules. Example, between chloride and Cl2 molecules. If you look at the chloride anion is negatively charged. Cl2 molecule is normally non-polar. Non-polar molecule where electron density is uniformly distributed between the two chlorine atoms. But what happens? Due to the presence of adjacent Cl minus ions, the electron cloud is repelled away by the anion. It results in some polarization in the Cl2 molecule. The chlorine on the left becomes electron deficient, chlorine on the right becomes electron rich. Electrons are repelled away from the chloride anion. So this results in some attraction between them. The negatively charged anion will attract the polarized Cl2 molecule. This attraction is ion-induced dipole attraction. This is Cl2 molecule polarized by adjacent chloride anion. Cl2 molecule, which was actually non-polar, but it is polarized in presence of adjacent Cl minus ions. जो बगल वाला anion है, ठीक है, उसका negative charge Cl2 के molecule के electrons को push कर रहा है. The electrons are shifted away from the anion. Electrons shift towards the right. The right hand side chlorine atom becomes electron rich. The left hand side chlorine atom becomes electron deficient. The Cl2 molecules polarized by adjacent Cl minus. आ रहा है समझ में?
Is this clear? जल्दी से नोट करो. Next देखो. Sorry. Next we'll talk about dipole induced dipole attraction. Dipole induced dipole attraction, it exists between polar and non-polar molecules. Example, between HCl and Cl2. HCl molecule, we can have delta plus on hydrogen, chlorine has delta minus. The chlorine molecule, which is normally non-polar, but it is polarized by the adjacent polar molecules, resulting in delta plus and delta minus charge.
The attraction between these two will result in dipole induced dipole attraction. This is Cl2 polarized by adjacent HCl. जैसे मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, कैसे मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट के पास आएंगे तो आयरन पार्टिकल्स में मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, दे आर मैग्नेटाइज्ड बाय द आयरन पार्टिकल मैग्नेट, iron particles are magnetized by the magnet and then they get attracted towards the magnet. Similarly, एक non-polar molecule जब एक polar molecule के पास या ion के पास आता है, it gets polarized, dipole moment is induced in them, ठीक है, and that induced dipole is then attracted by the polar molecule or ion, resulting in ion induced dipole or dipole induced dipole attraction. आ रहा समझ में? For a dipole induced dipole attraction, the interaction energy depends on 1 by r cube. एक second. 1 by r to the power 6. The interaction energy is proportional to 1 by r to the power 6. And lastly, we have London forces or dispersion forces. This is also called as instantaneous dipole induced dipole attraction. It's also called as instantaneous dipole induced dipole attraction. ठीक है, एक मिनट रुकना. This exists between two non-polar molecules. London forces or dispersion forces exist between two non-polar molecules. Example, between chlorine and chlorine. It's a well-known fact that even non-polar molecules attract each other. एक सेकंड, कोई डाउट है क्या आर्यन? एक मिनट रुकना. बोलो आर्यन, क्या बोल रहा है? Sir, I said nothing. You raise your hands, that's why. Oh, by mistake, sorry. Fluorine and chlorine are gases, bromine is a liquid, iodine is a solid. Even non-polar molecules, there is some intermolecular forces that is responsible for the liquid state of bromine and solid state of iodine. Okay, and that force is called London force or dispersion force or instantaneous dipole induced dipole attraction. Although they are non-polar, but even non-polar molecules have some instantaneous dipoles because electrons do not have any fixed position. Okay, at different instants, electron may be located at a different position. As a result, at different instants, there may be some instantaneous dipoles within a non-polar molecule. जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है. At some instant, electron may be on the right. At some other instant, electron may be on the left. So at every instant, we can say that there is some dipole moment in the molecule. एक तरफ एक बार dipole moment राइट की तरफ नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है, एक बार लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो वी कैन से दैट इवन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे हैव सम इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स. ठीक है, विल राइट दिस पॉइंट. Even a non-polar molecule
may have some instantaneous dipoles. Bracket में लिख लो, no permanent dipole moment. Non-polar molecules do not have any permanent dipole moment. Even a non-polar molecule may have some instantaneous dipoles, okay, which can induce dipole moment in adjacent molecules and attract them. So non-polar molecules have a uniform distribution of electrons. They get polarized instantaneous dipoles. एक एंड पे डेल्टा प्लस, दूसरे एंड पे डेल्टा माइनस. The attraction between them will be instantaneous dipole induced dipole attractions. This is instantaneous dipole. This is induced dipole. The attraction between instantaneous dipole and induced dipole is called London forces. Or dispersion forces or instantaneous dipole induced dipole attraction. Normally, the strength of forces varies according to their type. Type 1, that is the ion dipole attraction is stronger than dipole attraction is stronger than ion induced dipole is stronger than dipole induced dipole is stronger than the London forces. ठीक है. For molecules of the same substance, दो ही टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करेंगे. या तो दोनों मॉलिक्यूल, या तो मॉलिक्यूल्स पोलर होंगे या तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होंगे. फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, द फोर्सेस आर either dipole attraction or London forces, and mostly intermolecular forces include both. So some forces are London forces, some forces are dipole attraction. Or strength of forces will depend on two factors. One factor is the size of the molecule. Okay, that is often related to the molecular weight. More molecular weight, more size results in stronger attraction forces. Okay, and another factor is the dipole moment. Okay, so two important factors which we use here is, ये जल्दी से नोट कर लो. एक मिनट रुकना, मैं फैक्टर्स लिखा देता हूं. The two factors are strength is proportional to molecular weight or size, and strength is proportional to dipole moment. If molecular weight is comparable. Example देखेंगे. Molecular weight increases, the strength of intermolecular forces will increase. Iodine greater than bromine greater than Cl2 greater than F2. एक और एग्जाम्पल देखेंगे. ICl greater than Br2. यहाँ पे मॉलिकुलर वेट देखेंगे. ICl का मॉलिकुलर वेट आएगा अराउंड 162.5. इसका मॉलिकुलर वेट आता है 160. तो दे हैव कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट्स. ब्रोमीन इज नॉन पोलर. ब्रोमीन का डाइपोल मोमेंट 0
और ICl का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट्स कंपेरेबल हैं तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग आएगा, ठीक है। और अगर सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आयोडीन हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया है, बस एक पार्ट रह गया, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। देखो फर्स्ट में क्या है, विरोक ध्यान से देखना, इन पांचों फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। ऑल दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। मेनली ये दोनों फोर्सेस को, द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एंड लैंडन फोर्सेस आर मेनली कॉल्ड एज द वैन डर वाल्स फोर्सेस। इफेक्टिवली एक्चुअली all the five forces can be called as van der Waals forces. ऐसे लिख लो, ये intermolecular forces are also called as van der Waals forces. शॉर्ट में VDW लिखते हैं। All the five types of intermolecular forces are called van der Waals forces, ठीक है। और van der Waals forces में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मेनली डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करेगा एंड डिस्पर्शन फोर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से, साइज बढ़ने से, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर मोर इजीली पोलराइजेबल, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी मोर इजीली पोलराइज्ड, डाइपोल मोमेंट कैन बी मोर इजीली इंड्यूस्ड, ठीक है। तो दिस रिजल्ट्स इन, ठीक, हायर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लार्जर, व्हिच हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट। तो आयोडीन हैज अ हायर मॉलिक्यूलर वेट देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन, तो देयरफॉर आयोडीन हैज अ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन, ठीक है। क्लियर है ये प्रीवियस पेज देख लो जल्दी से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं लेक्चर एंड करता हूं, तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर भी है। हो गया अभी? चलो, थैंक यू एवरीवन। बुकलेट का गेट इक्विप्ड सॉल्व करो अदर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाकी पूरा करा दिया मैंने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।